This is the night. This is the night. This is the night we have been waiting for 20 years. हम सब स्कूल में थे, सोच रहे थे शायद 360 बन जाएगा, नहीं बना. कल ऑस्ट्रेलिया की जो मर्जी टारगेट सेट कर दे, या अगर हम 120 बनाएंगे तो हम उनको 110 पे ऑल आउट करेंगे. कल वो कुछ भी नहीं कर सकते. रोहित, विराट सब बदला लेंगे हमारे सहवाग, सचिन, गांगुली का. कल इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाएगा अहमदाबाद में. बैक टू यू गाइस. मैं एक तो ये चीज बोलूंगा ना कि भाई इट्स प्लीज डोंट टेक इन अ रेशियल मैनर, बट ऐसा बात है कि भाई इट्स कॉलोनियलिज्म वर्सेस इंडियंस. मतलब जो भी है ऑस्ट्रेलियंस जो है वो ब्रिटिश और वाइट स्किन है जैसे, and they have always shown they have that killer instinct, that winner mentality. In a war they always come on top. हम पता नहीं somehow due to lack of professionalism, lack of fight, the lack of toughness, हम हमेशा पीछे रहते हैं. कल का कि हम भी अब हो चुके हैं जो एक इंच भी नहीं देती, जो लास्ट बॉल तक फाइट करती है, जो डोमिनेट करती है टीम्स को, जो मैदान से बाहर फेंक देती है ऑपोजिशन को. दिखाना पड़ेगा. इट्स नॉट अ वांट, इट्स अ नेसेसिटी. ऐसा नहीं कि अगर कल इंडिया हार गई तो हम प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करेंगे या उनको गाली देंगे. या they have played a wonderful tournament. It has been a great tournament. They have been and the it has best been side. played in Yeah. it has been played in great spirit. But कल जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज को बैनिश करने के लिए, हमारे ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा को एक तरह से बैनिश करने के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक मोरल ऑफ द नेशन के लिए. और हम अभी जो खड़े हैं जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में एट पार विद पहले यूएस और यूएसएसआर, रशिया और यूएस दो सुपर पावर्स होते थे, और हम अब कहीं ना कहीं टॉप 5 में आ चुके हैं. एंड वी हैव टू शो दैट वी आर दैट नेशन, नॉट इन जस्ट इन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स बट इन स्पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी. हमें ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है जीतना. आई नो एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, बहुत जगह है जहाँ पे हम ये कर रहे हैं, बट ये एक स्पोर्ट है जिसमें हम सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली. लोग जाके मैचेस देख रहे हैं. 1,30,000 लोग कल रहेंगे, उनको हम साइलेंट नहीं देख सकते. वो हमारे नेशन के आवाज है. That's all I have to say. Man, I was in 10th class when we went into the final. I feel कि 2015 तक I used to always get scared about Australian team because they had so many superstars. After 2015, I never thought this Australian team ever have a fall. But 2019 में हुआ था. There was a rubbish team. And I felt they will follow the pattern in this World Cup as well. But maybe some Australians might take it offensively, but I felt they had some luck coming into the semis and then some luck as well in semis and to come into the final. I don't think this is like a proper Australian fight they gave in this World Cup. They were first time I saw that they were getting some luck in some of the games, and that's how they came through. I don't think this Australian team is that fighting team, I feel. I mean, there are players where they have that fight, but in general, the overall matchups, I don't think they are match to this Indian team. But knockouts में कुछ भी हो सकता है यार. इसलिए And it's शिखर ने बहुत जो significance इस मैच का, it's more than just a match. But again, यार, there is also a skill difference जिसकी वजह से हम इतना confident बैठे. There is a huge skill difference between Team India and Team Australia. Yes, for sure. But it's Pratik, it's not about skills on this day. मतलब कि I know हर जगह skill है और important है, skill difference है. You are right. We are better cricketers. बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास.
Yeah, Shikhar Kunal, Singh. ये जो final nerves, it's about taking your opponent, knowing your opponent, and exploring the weakness out of. मतलब it's you have to go with a killer instinct in these kind of matches. जैसे स्टार्क ने मैकलम को पहले ही ओवर में बोल्ड कर दिया था, उस तरह yeah. का चीज कुछ. या कुणाल, you were saying, sorry. Yeah, so yeah, I think Shikhar started on a slightly emotional note. This match has a big significance. I mean, anyways, after 20 years, coming from the 2003 World Cup finals, or even before that, from what we can remember, we've always been like a second fiddle or third fiddle nation in cricket overall, right? We are never the dominant nation. It has always been Australia, or maybe beach mein England, or maybe South Africa beach mein, whatever it have been. This time we are here to show that we are actually the best and we are the deserving winners. We are not here on the basis of luck or just a few chances here and there. We are hosting the World Cup first time only in India in 2015 and in 2011 as well. It was subcontinent, right? Yeah. So we have Yeah. hosted the tournament really No. well. We have played like amazing cricket, and yeah, we should show the world that we are actually the best and we can And beat all other teams convincingly. And both और teams are जहाँ तक known to handle nerves pretty well, यार. हम लोगों ने वहां जाके yeah, बेइज्जती किया था. so That yeah, shows I agree. are शिखर जो also still. And जब it's 1.3 lakhs लोग रोर करेंगे टीम इंडिया के लिए, तो I'm sure Australia will feel that pressure more than India. true. yeah, Australia has still won a lot of matches in India. ठीक है, in front of big crowds. Yeah. देखा जाए तो Eden Gardens में उन्होंने matches जीते हैं. I feel कि more than a game of skill, it will be more of handling the pressure in a final game. You can say कि हाँ, India के players better है, but can you ignore the fact that they have Travis Head, they have David Warner, they have Steven Smith. I mean, ठीक है, he might not be in form, but he's still Steven And Smith. They have Kunal, Pat Cummins, they have Maxwell, yeah. they have Stark. You cannot ignore all that, right? No, we are not ignoring. No, we no. do The expect thing about is, that. in the finals, we always talk about toss, but I feel कि this game toss dependent नहीं है. That is the Yes. best part of this game. Seriously, yeah. Very Yeah. good point, man. Very good point. Usually we get scared about toss. Like in 2015 semis, I think we lost because of the toss. Yeah, If we even had in won the toss and batted first, we would have were won that scared against if Australia. India doesn't bat first. Yeah. Yeah, so I think this game toss dependent nahi hai because of the stats we'll show in the upcoming slides. But yeah, and also people were saying that we should have lost one of the games in the league mein. But why? Why we should? That is superstition थोड़ा. Yeah, ठीक है. why? Yeah, it would ऑस्ट्रेलिया कर like सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो why not? We should go with a killer instinct, and I hopefully we will see the best out of this Indian team. And yeah, Pratik, No, yeah, absolutely. Love these points. I think we should start with the deck, guys. yeah, So Yeah. इस Vishnu बार has हम some लोग really हमारा free interesting flow turns. stay Yeah, रखना. We've also made a deck before practically analyze. Yeah. yeah, please, Vishnu, you can share the presentation, but we'll just keep talking along as you yeah. share it. But guys, honestly, who do you think is the key player tomorrow from Australia? Let's start with Australia. Who do you think is the key player tomorrow? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो एक्स फैक्टर प्लेयर है उनका वो मैक्सवेल है. हेड एंड मैक्सवेल, आई थिंक. आई नो लोग वार्नर और स्मिथ, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का, लोग उनके तरफ ज्यादा जाएंगे. बट मुझे लगता है हेड और मैक्सवेल जो है, दे कैन एक्चुअली टेक दोस रिस्क्स, एंड दैट वे दे कैन फॉल डाउन ऑल्सो. मतलब उनका डाउनफॉल भी हो सकता है, बट if those risks come off and somehow मतलब कि India will be under pressure. They have been under pressure only once or twice in the tournament. एक पहला मैच ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इंग्लैंड के साथ, और फिर सेमीफाइनल्स में जब डैरिल मिचेल वाज प्लेइंग दैट नॉक. मे बी 3 बार इंडिया प्रेशर में रही है, एंड वी हैव हैंडल्ड इट वेल. आई मीन, वी हैव हैंडल्ड इट सुपर्बली. But yeah, can we handle it the fourth time? That will be the test. Shikhar, what I feel is कि Maxwell का मुझे लगता है कि he has to get too much lucky to score a good innings. I feel
Yeah, true. he I mean, has a what happened that day was like a once in a lifetime thing, right? You yeah, cannot I expect mean it to happen उसका कभी भी. उसके एवरी 6 बॉल्स में एक क्या रिस्की शॉट रहता है जिसमें वो आउट हो सकता है एवरी 6 बॉल्स में And सो आई फील हाँ कि कुन, he is very I mean he has to get extremely lucky to score a big innings on Mm, final I feel. yep. And India will be bowling कुणाल very tight on a big ground. It will be difficult for Maxwell to play that kind of innings this time. इट्स नॉट दैट बिग अ ग्राउंड एक्चुअली कुणाल पता है मुझे क्या लगता है ना मैक्सवेल इज अ बिग ही इज कॉल्ड द बिग शो इज अ बिग मैच प्लेयर अगर तू उसका ओडीआई हंड्रेड्स देखेगा तो उसके 4 ही ओडीआई हंड्रेड्स है और उसमें से 3 वर्ल्ड कप्स में मतलब he comes he loves the big stage so anyway we'll go ahead with Vishnu's slide but I think Maxwell getting him early is the most important thing और हाँ वो इंडियन बॉलर्स के पास वो स्किल है आउट कर सकते हैं डेफिनेटली बट वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड True. Pratik, you want to start off your slides? I'm So starting Pratik has now. created slides from Lennox. He's even using the Lennox tagline, "Here is life." या Pratik, सॉरी वो ऑफिस का रह गया होगा लोगो. I didn't share yeah, it. Honestly not It trying looks to good. promote but No, Lennox, we should get Lennox as a sponsor. That would be great. Yeah. come on Pratik, go. guys, I भाई was आई होप फिर से तू फंस ना जाएगी रन से फॉर डेटा Yeah. प्रिवेसी लाइक बहुत बड़ा मैच है और एक ओडीआई में 100 ओवर्स होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट ओपनिंग पार्टनरशिप इज द बिगेस्ट फैक्टर लाइक अगर कल कुछ प्रेडिक्ट करना है एक एआई मॉडल बनाना है तो ओपनिंग पेयर का सक्सेस डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द विन डायरेक्टली कोरिलेटेड विद हाउ बिग दीज टीम्स कैन गो तो मैंने क्या किया दोनों ओपनिंग पेयर्स को एनालाइज किया बाय द वे शुभमन और रोहित अगर सबको मेरे को नहीं पता कितने लोगों को पता है इसी साल से ओपनिंग करना स्टार्ट किया ओडीआई में जनवरी से जब हम इंडिया Yeah. खेले थे तो दैट इज वियर्ड कि इन्होंने इसी साल स्टार्ट किया बट ज्यादा इनिंग्स खेली है वार्नर और हेड कंपेयर में जो एक्चुअली ऑन एंड ऑफ 2017 2018 में भी ओपन किए साथ में एंड 2022 से रेगुलर ओपन स्टार्ट करे बट एक चीज जो सामने आई है कि जब भी ये लोग को अच्छा स्टार्ट मिलता है बोथ ओपनर्स इनकी टीम का टोटल बहुत हाई बनता है यू विल बी फैसिनेटेड जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है और 50 प्लस स्टैंड अगर ये दोनों देते हैं एटलीस्ट 50 प्लस India goes on to make an average score of 355. Similarly for Australia, if these two gives a good start, they go on to make 378. These are the average scores when these two go along, when these two different opening pairs go along. And that same average score drops down to 242 for India, only 242, and 278 for Australia. So almost 100 runs ज़्यादा बना रही है इनकी टीम. Like this is obviously थोड़ा small sample size है, इतना अंतर भी नहीं होना चाहिए logically. But I can definitely see that this opening partnership for both teams can be a difference between 250 score and a 300 score. इतना तो हम definitely कह सकते हैं, being in the good confidence interval statistically. Pratik has spoken like a true data analyst अभी तो. इतने numbers और correlations but yeah, honestly. And also interestingly, this opening partnership, one is both are left-handed and another is both are right-handed. Similar to Sachin Sehwag and Gilly. Oh, Yes. yes. Sachin Sehwag and Yeah, Gilly but back in the Gilly day. and Hayden. Back in the yeah, day. for both teams, I guess the opening is really important. But I feel in finals are more of a game of nerves than skill. So if any of the teams is able to, give a really big and aggressive opening, that will go a long way in, pumping up the tempo at the start. So Shikhar yeah, asked this me is probably my the most answer, important thing like, who is starting. the most key player? My answer is Hazelwood and Bumrah because दोनों teams को ये opening stand होने से रोकना है. So that is my answer for Shikhar. True. For me, the True, key true. player for Australia is actually Head because the way he bats, right, he can put India against Yeah, they don't have a tremendous plan pressure. B if Head gets out early. Like, Yeah. yeah truly agree Performance of मतलब performance of Hazelwood, as Pratik has said, and for me, from India, Siraj, because I am pretty sure they will target Siraj at the start Then I for would the put, thing. Weak I link would वही है. put Siraj and Stark in the same bucket because teams are going after them and they both need to prove a point. yeah. Here, honestly, I'm scared of Stark because he brings in a lot of experience, playing in World Cup finals and
knockouts. By the way, इनका average stand रहता है 75 for Gill and Rohit and 78 for Head and Warner. So they are both like, I was shocked. They're very much similar. 70% of the times they make 50 plus stand. Like बहुत सारे similarity इन दोनों के playing style में और performance में. Yeah, and just think about Warner. ठीक है, Warner is playing his last World Cup. ठीक है, I mean, everyone knows that. Don't you think Warner will, be wanting to make a big impact in this game? Yeah. And it's going to be very difficult tomorrow. I ठीक है, think very that difficult. holds true for Rohit Sharma also. I don't see him Yeah, playing the next ODI World Cup. Yeah. Yes. Max ODI Yeah, True. I'm talking about Australia. ठीक है, like we might say कि India has been much better, लेकिन Australia is not, going down easily. No, Australia is. I mean, Australia, as I say, once Australia is in final, they are the favorites to win it. Any other result is an upset. अरे भाई Any other result is an upset. भाई इसके लिए हम I तुम्हें think they स्लाइड are में the सामने वाली favorites. टीम की ताकत दिखा रहे हैं हमारी टीम की. Okay, so तो this I नहीं, mean, 1,30,000 में भी अगर और ऐसी टीम और विद ऐसे स्किल सेट के साथ भी अगर वो लोग फेवरेट्स हैं, तो फिर हमारी टीम फिर तो बहुत वीक है. मतलब अगर ऐसे सिचुएशन में भी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स, देवांशु I भाई think, कमेंट सुन के रोहित बोल रहा है तो क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? then we should not win this final. Then let Australia only win. Because अगर हम इतने अच्छी क्रिकेट खेल के और 10 विन लेके भी मतलब हम फेवरेट्स नहीं है, then Australia we should hand over the trophy to them. yeah, but I mean, these things apart, there are a lot of similarities. I mean, I don't. वैसे मैं ये पाकिस्तान वाली बात होगी, पाकिस्तानी fans. There is a lot of similarity between 2003 World Cup and this World Cup. There is. Like if it मतलब पूरे मैचेस कैसे खेले गए, दोनों टीम का बैलेंस और परफॉर्मेंस, मतलब बेसिकली स्टार्क कॉन्ट्रास्ट जो दोनों का चल रहा है, तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है. बट इट्स नॉट कुदरत का निजाम. एनीवे that's fine. Yeah. Let me. I think there is a big gap. There is a big skill gap between India and Australia. There is a huge difference in Rohit Sharma and Travis Head. भाई ट्रेविस हेड का मतलब मैं तो बहुत उसको मानता हूँ कि वो टेस्ट में जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है लास्ट 1-2 साल में, मतलब एशेस में भी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, बट ही इज नॉट नियर टू द क्लास ऑफ रोहित शर्मा. रोहित शर्मा ने जो इनिंग्स टेस्ट मैच में भी खेला है रिसेंटली, आप देख सकते हो, मतलब वो एक अलग लेवल पे. बट बिग स्टेज पे टैलेंट वाइज गिल इज बेटर देन हेड मैन. गिल का टैलेंट भी हमने देखा यार, वो आईपीएल फाइनल्स में और नॉकआउट मैचेस में. और वार्नर अपना पुराना वार्नर नहीं रहा ना, मतलब वो T20 हंड्रेड्स मारने वाला वार्नर जो 2010 में आया था, वो एक अलग चैलेंज था. लेकिन अभी एक मैच्योर मोर डेवलप्ड प्लेयर वार्नर है, विच आई फील धोनी जैसा ही हो गया है. मतलब कि हाँ, ही विल विन यू गेम्स, बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही थ्रेट है. और इंडिया नीड्स अ बिग थ्रेट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मैक्सवेल इज द बिगेस्ट थ्रेट, क्योंकि वो रिस्क ले सकते हैं और कोई भी एड भी रिस्क ले सकता है, बट विद नॉट विद दैट स्किल जो मैक्सवेल ले सकता है. क्योंकि तो मुझे लगता है कि मैक्सवेल ही सबसे डेंजरस प्लेयर है अभी भी, मुझे वही लगता है. Because Maxwell. Pratik and Vishnu, do you have any slide for fielding as well? Yeah, I think we'll fielding का है क्या विष्णु? नहीं यार. नहीं यार, fielding का. Okay. Fielding. Yeah, but let's talk about these. Yeah, this slide I want to share minutes. is like, okay, Maharaj may be most economical bowler in this tournament. I'm excluding Ashwin because he only played one match. And Zampa has taken more wickets. But I was looking at a combination where a bowler is economical and is picking wickets. And Indian bowlers were standing out. So we have to talk about our spinners as well. Because right now, Bumrah, Shami, they are overshadowing their contribution in the middle. So Kuldeep and Jadeja both are going around 4.3 economy. In India, जहाँ पे 300 बन रहे हैं मैचेस में, वहाँ पे 4.3 के इकोनॉमी से ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं. And they both have picked 15 and 16 wickets respectively, which is amazing. Great effort. Great point. और कल ऑस्ट्रेलिया को अटैक करना पड़ेगा कुलदीप और जडेजा को. अगर नहीं करते तो हार ही जाए. मतलब आए मत ग्राउंड पे. And also Australia did not attack Glenn Phillips. Now remember they are against these two spinners. This slide also proves the point that matchups are overrated. Because you see, these are both left arm spinners, and I mean they are performing well
तो ऐसा नहीं है कि भाई मैचअप्स से ही आप मैच जीत सकते हो. दिस अगेन इज अ वेरी गुड पॉइंट व्हिच इज देयर. Yeah. Yeah. And वही नहीं, लास्ट मैचअप्स तो है कि मैचअप्स ऑस्ट्रेलिया मिडिल ऑर्डर के आई लिए नेवर बीन अ फैन. बिकॉज दे आर टेंटेटिव अगेंस्ट स्पिन, तो उनके लिए इन दोनों को हैंडल करना मुश्किल होगा. तो ये वही पॉइंट आता है कि बाय चांस अगर ऑस्ट्रेलिया का अच्छा स्टार्ट हो भी जाता है, वी So विल Australia has दिस right-handed batsman. Australia has right-handed batsman from number 3 to number 7. Hmm. Oh, Yeah, that's Aussies again Aussies a also thing. have Steven Smith and Labuschagne who can play spin well as well. So let's see. Yeah, that's why Dave is asking Ash to Steve play by. Smith. Steve Yeah, Steve Smith Smith is not really known as maybe, a but Labuschagne to खेले. By Steve Smith yesterday. is known for playing spin well, but I think इस tournament में Labuschagne has played much better than him. Yeah, The same ground पे उसने वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो innings खेला था against आदिल रशीद, he played that innings very beautifully. Steve Smith is really out of form. Yeah, that day he played spin well, but I am not having much expectations from. And also Smith white ball में कुछ नहीं कर रहा है यार past 4 years. Smith Pratik, has been a tell disappointment here. Bash is averages. भाई Steve Smith averages around 50 in ODI cricket at home and he averages only 33 outside home. So he is a flat track bully, big time flat track bully. उसकी इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई परफॉर्मेंस मुझे याद आती है तो 2020 के सीरीज में जब वो 36 ऑल आउट हुआ था, उसके पहले एक ओडीआई सीरीज हुई थी, उसमें उसने 2 बैक टू बैक 60 बॉल में 100 मारे थे. लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में उसने किया था, उसने इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में कभी ऐसी इनिंग्स नहीं खेली जहां पे उसने ट्रूली डोमिनेट किया है. तो आई हार्डली I also know the reason because test में उसको time मिलता है. If he is not in form also, he exactly. could play Exactly. some balls and get into that form. यहाँ पे ऐसे नहीं चलता है भाई. First ball यहाँ से प्रेशर आ जाता है. हाँ एंड प्रेशर आता yes, है, yes, फट correct. जाती है वो नॉक उसकी. बहुत ही बेकार नॉक थी ना, तो टीम को एंड तक लेके गया और 32 ऑफ 60 करके वो थोड़ा स्कोर वो रन रेट प्रेशर भी ऐड कर गया था. Yeah, and he's looking very uncomfortable और as well वो these days. And guys, this वो is the है same attack. स्पिन का जो अटैक है ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका के पास भी यही अटैक था. लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म हाँ. चाइना मैन. द सेम अटैक व्हिच इज देयर. So, तो राइट में इमेज में आप देख हैंड सकते आई हैं शामी रेडी है. एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ को पेस मिल जाता है और बाउंस मिल जाता है और वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन से अपना रिस्ट वेस्ट घुमा के खेल लेता है. मैंने वो 200 देखा था उसने जो सिडनी और कैनबेरा में मारा था. आई नो दैट सीरीज इंडिया लॉस्ट 2-1. Then we won the T20 series with Jadeja and some good performance by Natarajan also. सुपर सब Chahal चहल. also. बट वही है ना कि एक्चुअली हम दोनों ही टीम्स को ऑपोजिशन स्पिनर्स को मारना पड़ेगा. अगर इंडिया मैक्सवेल को 10 ओवर में 40 छोड़ देती है और जैम्पा को 10 ओवर में 40 छोड़ देती है तो भाई इट्स नॉट अ गुड स्टेट ऑफ मैच फॉर इंडिया. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया अगर कुलदीप और सोचती है कि हम कुलदीप को 10 ओवर में 40 और जडेजा को भी 10 ओवर में 40, तो इट्स दे आर नॉट इन अ. but So they have to attack the spinners. Ahmedabad pitch is quite difficult. I will show you the stats in the next slide. But let's go through this slide quickly because ये सबको पता है शामी का क्या इम्पैक्ट रहा है वर्ल्ड कप में, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. मैंने पर सारे बॉलर्स के स्टैट्स चेक करे 1975 से लेके जो भी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, कोई भी क्लोज भी नहीं आ रहा है शामी के. नो वन इज इवन क्लोज. ओवरऑल 13 से कम है उसका एवरेज वर्ल्ड कप्स में. 3 वर्ल्ड कप्स खेले हैं उसने अभी तक. क्लोजेस्ट है मॉर्ने मॉकल विद 19 एवरेज, मतलब 19 और 12.5 में बहुत अंतर है. तो शामी इज द गोट राइट नाउ. शामी का होम ग्राउंड है जीटी के थ्रू एंड स्ट्राइक रेट ऑफ शामी इज 15. जस्ट वांट टू प्रोसेस इट कि इसका क्या मतलब है. इसका ये मतलब है शामी अगर 10 ओवर डालता है वर्ल्ड कप मैच में तो वो 4 विकेट लेता है. मतलब कैन यू बिलीव दिस इज एवरेज परफॉर्मेंस. सो शामी को कैसे काउंटर करेगी ऑस्ट्रेलिया और कितनी देर लगेगी शामी को स्ट्राइक करने में, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. Yeah, it will be interesting to see is how they will handle, man. If Warner or Head are still staying and ये आ रहा है first over में, so it will be interesting to see how they will attack him. Whether they will go against him or they will wait for the other bowlers. So yeah, it will be very interesting. और कुछ बोलना चाह रहे हो शामी के बारे में? नहीं, चलो. I will go through the stat. Both teams in this World Cup
batted first for 5 times. 5 times different venues में बैट किए. यहाँ पे you can see the mostly their power play one is quite similar. They are going 1 wicket on an average with 7.2 run rate. Then यहाँ पे different start हो रहा है. Power play 2 में we were going close to 6, but on an average of 2 wickets falling. But here, Australia का 4 wickets गिर रहे हैं. That's where the entire momentum shift is happening for the teams, where teams are coming back after that very good start. So power play 3 में हम लोग we were taking that momentum of batters into the last 10, and we are scoring 9.3 if per run rate pe. Whereas Australia, they are dropping when you compare with India, they are dropping 1, but still they are going on a 8.1. But still, because of the middle overs, the teams are coming back and they are having a below par score as per their So power play के so 10 overs power में. play 2 में Australia lose 4 wickets on an Yeah. average. That's 10 what ओवर में you're 4 saying. विकेट गिरना भाई. Yeah. On an average, 4 That's wickets. नहीं 30 overs में, right? 11 to 40. Yeah. You're talking about Yeah, power 11 play to 2. 30 में their run rate 5.8 पर score कर रहे हैं, but their wickets are 4 on an So first average 30 गिर रहे हैं. overs दोनों का same run rate है. That is very मतलब Yeah. कितने close है Yeah. 7.15 like एकदम same है. हाँ. बस चलो wicket first number of middle wickets overs. India preserve कर पा रहे हैं. Yeah. Middle overs is where Australia is losing the momentum totally, Momentum. and that is again what we have been talking. That is the fear of collapse. कि भाई अब तो इतने रन पे आ गए हम लोग 10 ओवर में 80 रन तो बना लिए, लेकिन अब क्या होगा हमारे साथ? अभी 40 ओवर और खेलने हमारे विकेट्स ही नहीं रहेंगे. तो that fear mentality, and I have seen first time in Australian team, I think Devanshu pointed it out during Ashes, और उसके पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ये शुरू हो गया था. ऑल्दो उसके बीच में भी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गए, लेकिन ये एक फियर फैक्टर है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग टीम में. तो कल उनको ओवरकम क्या कर पाएंगे ये लोग ये फियर को? क्योंकि उस दिन भी धर्मशाला में 500 रन तो भाई बना देने चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, जैसा पिच था और जैसा उनको स्टार्ट मिला था. T20 से भी बेटर स्कोर वो लोग 20 ओवर्स में पोस्ट किए थे. तो दैट इज द फियर ऑफ कोलैप्स. नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी सेम हुआ था. मैक्सवेल आके मार दिया 390, नहीं तो उस दिन भी 390 नहीं बनता. नहीं, वहां पे ही थोड़ा एवरेज वहां पे 9 हो रहा है, नहीं तो इट वुड हैव बीन इवन लो. वहां पे 4 विकेट्स का एवरेज गिर रहा है ना वो पावर प्ले 2 में. इन दैट पावर प्ले दे वांटेड टू एंकर रोल्स. लाबू एंड स्मिथ दोनों खेल रहे हैं, स्टिल दे वर गेटिंग आउट. So there is a fear. This is why they are not able to match India's run rate in power play 3 because they lose wickets in power Even play. if you चलो भाई ठीक है, फर्स्ट इंडिया का गेम था, लो स्कोरिंग था, and we also played our first batting का innings low scoring 229 against England. So even though if you remove that, still India is scoring at 10.4 and these guys are scoring at 9. So there is quite a difference in run rate in the last 10 overs में. Yeah, actually Australia का I think इंडिया का मिडिल ऑर्डर ही एक वो middle बैटर overs. वहाँ पे बहुत ज्यादा I think ये जो स्टैट है this actually मतलब proves कि how impactful contribution is of श्रेयस अय्यर. क्योंकि this whole thing is क्योंकि उनका नंबर 4 जो है that is स्टीवन स्मिथ और यहाँ पे नंबर 4 आ रहा है श्रेयस अय्यर. वो अभी करंट फॉर्मेट में और फॉर्म में स्मिथ कहीं पे भी नहीं अड़ता श्रेयस अय्यर के. नहीं, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली का भी डिफरेंस दिखाता है ये, क्योंकि जो उनको विकेट्स लूज कर रहे हैं वो लोग मिडिल ओवर्स में ना, तो वो इंडिया वो लूज नहीं कर रही है बिकॉज विराट इज एंकरिंग. एंड एक्चुअली हाँ, श्रेयस अय्यर का जो है इम्पैक्ट वो तो लाबुशेन उसके आसपास भी नहीं है, मतलब कि एज अ नंबर 4 बैटर. श्रेयस का एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ. Usually when MSD used to play either spinners or spacers, wide fifth stump के बॉल को ये 6 नहीं मार सकता था because it's not coming too close to the body. But Shreyas, by you ball anywhere, his bat swing is such that he can score sixes from anywhere, man. Wide balls डालो, leg side डालो, कहीं पे भी डालो, he is scoring sixes.
He's like, Why Lakshman, VVS Lakshman, why he used to play Shane Warne so easily? Tall and big reach, and Shreyas Iyer is the tallest guy I think Indian team में. उसका reach है वो Better. पहुंच Yeah. जाता है वो सब balls पे जहाँ पे normally batsmen नहीं पहुंच पाते. true. No, absolutely true. Next, these are the Ahmedabad stats after the renovation since 2021 and World Cup के stats है. So I'm glad you brought this up, man, because कल जो सब 325 350 का गेम बोल रहे हैं वो है ही नहीं. अभी तक 286 हाईएस्ट स्कोर है yeah, रेनोवेशन के बाद. so in this World Cup average is 250. First innings का economy paces का 5.5 है and spinners का 4.8. So it's pretty, you can see there is, and if you see in general 2021 say the pacers ka 5 hai and spinners ka 5, so it's kind of a मुश्किल है in batting first bowlers को वो उतना नहीं मार सकते हो जितना पुराने स्टेडियम में मार सकते थे. So the pitch is quite difficult. So it will be, as you guys were saying yesterday, कि losing toss, I feel कि it's a best decision. I Because love that कि बैटिंग फर्स्ट ने 3 जीता है, बैटिंग सेकंड ने 4, एकदम बैलेंस्ड. लाइक कोई balanced ऐसा है, नहीं है but कि still, yeah. yeah, that is, and since 2021, the average total is 238, not even 250. So I was watching DK Dinesh Karthik Crick Buzz video. Someone asked him that what do you think, win the toss and do? Well, it's a World Cup final, man. You have to win the toss and bat first. And he was smiling. The point is this: everyone who will win the toss will bat, but there is no surety that it might work or it might not work. Yeah. To be Correct. honest. See the second innings economy यार, Pacers का 7.4 गया, Yeah. 5.7 in the World Cup. But in general में देखो 6.1 for the Pacers, 5.7. So जो आएगा for sure. And it will be, I think, first 10 overs में if we bat first and set a target, first 10 overs में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. नहीं तो Yeah, it will be quite difficult. एक्चुअली वही है ना कि कोई ब्लेम नहीं करेगा अगर मतलब कि तुम बैट फर्स्ट करके हारो. मतलब दिवांशु भाई का जो पॉइंट है कि वर्ल्ड कप फाइनल में सेफ चॉइस है ना ये कि बैट Yeah. फर्स्ट करो. अभी गांगुली की लोगों ने ऐसी मार ली मतलब कि उसने यार 2003 में बॉलिंग करने का चूज कर लिया. वो तो डे मैच था बाय द वे, उसमें तो कोई सेंस भी नहीं था बॉलिंग फर्स्ट करने का. बट ठीक है उसने चेज कर लिया. 2 साल बाद उसी पिच पे साउथ अफ्रीका ने कर दिया 434 फॉर मतलब चेज. तो इट्स अ सेफ डिसीजन टू बैट फर्स्ट. बट वही है ना दोनों टीम्स, मैं तो अभी से बोल दे रहा हूँ लिख के कि दोनों टीम्स बैट फर्स्ट ही करेंगी. बट इट विल बी अ गुड टॉस टू लूज. मेरा यही बोलना है कि जो भी हारेगा और वो बच जाएगा वो सेफ डिसीजन लेने से शायद उसका फायदा हो जाएगा क्योंकि इट्स अ चेजिंग very ग्राउंड. good point. Very good point, यार. Rohit Sharma said कि toss is immaterial. उसने बोला है इन प्रेस कॉन्फ्रेंस कि इससे कुछ लेना देना नहीं है. बट द थिंग इज दिस, किसी ना किसी को तो टॉस जीतना ही है और उसको डिसीजन लेना है. वो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या होगा. चिकन ने पॉइंट बहुत अच्छा बोला यार. हम लोगों ने भी न्यूजीलैंड की कितनी मारी थी जब उन लोगों ने वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बॉलिंग ली थी. तो ये हमेशा क्रिटिसाइज करा जाता है उस टीम को जो बॉलिंग लेता है वनडे क्रिकेट में. बिकॉज ऑफ द यू कैन से द मूवमेंट कि दिस इज अ फाइनल वर्ल्ड कप. तो लोग चाहते हैं कि भाई पहले बैटिंग कर लो. वो जैसे बिकॉज देयर इज अ रीजन इंडिया मेड 183 अगेंस्ट माइटी वेस्ट इंडियंस. दे वन बिकॉज इट वाज अ वर्ल्ड कप फाइनल. सो Yeah. दिस इज हाउ इट इज कि मतलब हो सकता है. 2011 में we won the toss and bowling first लिए थे. नहीं भाई उन्होंने जीता था. 2 बार टॉस इन्होंने हुआ था. okay. संगकारा Oh बने. yeah. बट Yeah, इंडिया में फिर true. भी इन जनरल ठीक है. जनरली जब वार्म डेज रहते हैं आप बैटिंग फर्स्ट कर लो. बट साउथ अफ्रीका ने एक्चुअली बहुत बेकार डिसीजन लिया. उनका भले चेजिंग का जो भी रिकॉर्ड है, लाइक ओवरकास्ट कंडीशन में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अरे बॉलिंग करने का मौका दे दिया प्रतीक, था. let South Africa go, man. They've reached Johannesburg now. Let them be there. There is Hello. no point. Next slide, please. No, Next that's one. it. That's it. Talk now. Okay. Okay. So my view, as I've been saying for a couple of days, World Cup finals mostly are all about fielding. Whoever will field best, they will win the final. It's not about batting, bowling. वो दोनों कर लेंगे. You don't
मैं तो बोल रहा हूँ दोनों टीमों को ही कैच नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आप जैसे ही कैच ड्रॉप करोगे ना, यू आर इन इमीडिएट प्रेशर, इमीडिएट, Yeah, और वो true. सब पे दिखेगा। अब जस्ट इमेजिन इंडिया ड्रॉपिंग लेट्स से मैक्सवेल, या फिर ऑस्ट्रेलिया अगेन ड्रॉपिंग विराट कोहली, उनकी फट के हाथ में आ जाएगी कि मैंने क्या कर दिया ये। तो दैट्स द काइंड ऑफ प्रेशर इज देयर। तो whoever will field best, hopefully they will win. बट हाँ, And मैं ना टेंस नहीं हूँ जितना मैं साउथ सेमीफाइनल को लेके टेंस था ना। आई एम नॉट टेंस विद फाइनल। मेरे को पता है कि कुछ भी हो सेम सकता सेम। है। same, वहां ये man. था कि न्यूजीलैंड से नहीं नहीं, हारना, एक चाहे और कुछ चीज भी है हो कि जाए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से मतलब हम हार के इतना में दुख नहीं होगा जितना न्यूजीलैंड से शायद होगा, बट मैं तो चाहता हूँ ये बहुत मतलब दुख क्या, अब हम किसी को गाली नहीं देंगे और ऐसा तो हम नहीं करेंगे, बट वी नीड दिस ट्रॉफी। आई मीन Yeah, हम्म, इट्स बीन टू लॉन्ग एंड इट्स बीन टू like, हार्ड। yeah, और रोहित अब और अब विराट अब ने चाहिए। या रोहित और विराट रोहित ने के लिए चाहिए यार। या मेरे को तो नहीं यार, रोहित क्या। रोहित एंड विराट ने ऑस्ट्रेलिया की इतनी मारी ना लास्ट 10 साल में। एक और बार हम्म मार दो यार, सच में। एक और सीरियसली एक बार और मार दो और भाई, रिटायरमेंट मुझे ले वो लो यार। विराट का शॉट याद आता है जो उसने फॉकनर को 6 मार के बोला था ना, भाई जा बॉलिंग कर। या एक और बार भाई, एक और बार मार दो भाई, बस है। वी डोंट वांट एनीथिंग इन फ्यूचर। या आई मीन अभी रोहित शर्मा का लोग बोलते हैं कि डबल कब आएगा, वो खुद बोलता है कि लोग मुझसे पूछते हैं 200 बनाओ और सब कुछ। पहली बार तो मुझे नहीं लगता कि अब रोहित शर्मा की फिटनेस ये है कि वो 200 बना सकता है। हाँ। वनडे के अंदर तो कि वो या इतना मार मार के, तो वो तो जितना मारे, मतलब आई मीन वो 2011 में सब बोलते हैं कि हमने सचिन के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, जीतना है। मुझे लगता है रोहित शर्मा अपने लिए, अपने जीतने के लिए खुद ही खेल रहा है कि बोले भाई हाँ। मुझे जीतना है, चाहे किसी को जीतना हो ना हो। या तो उसके ऊपर ही yeah, चल let's रहा है see. ना पूरा इंटेंट एंड मैं सब थोड़ा सा कुछ। फील्डिंग स्टैट्स देख रहा हूँ तो यही लिखा है कि केएल ने एक्चुअली बेटर कीपिंग करी है इंग्लिश से। केएल ने 16 डिसमिसल्स किए भाई बिहाइंड द विकेट, ओनली हम्म ओनली बिहाइंड क्यूडी के इन द या वर्ल्ड कप। ही इज इक्विवेलेंट टू राहुल द्रविड़ या 2003 का स्टैट। yeah. तो डीके कैचिंग में डीके इन इस शो डीके ने अपने शो में ये भी पॉइंट बोला है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड कप वो स्कॉट एडवर्ड्स को ऊपर रख रहा था कीपिंग के अंदर, बट एज एन ओवरऑल पैकेज केएल इज माइल्स अहेड ऑफ एनीवन, इवन अहेड ऑफ डिकॉक इन या दिस वर्ल्ड कप। या तो डिकॉक या उसका तो भी भाई डिकॉक का भी लास्ट लाइक चले गया फर्स्ट फ्यू भाई, मैचेस के लास्ट बाद। 2 ड्रॉप्स के बाद। 2 ड्रॉप्स किए थे भाई सेमीज में तो। चलो। एंड कैचिंग में लबुशेन ने टेक मोस्ट कैचेस लिए 8 कैचेस एंड जडेजा जस्ट वन बिहाइंड 7 कैचेस। तो ये दोनों ऑब्वियसली दे आर द बेस्ट फील्डर्स फॉर ईच बेस्ट ऑफ देयर फील्डर्स ऑफ साइड्स, देयर टीम। यस। हम्म। बट आई थिंक जडेजा इज द बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच, लाइक या बाय फार, बाय फार बिकॉज ही। जडेजा का थ्रो जडेजा एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है, रनआउट्स भी बहुत करता है। जडेजा इज द बेस्ट फील्डर करेंटली इन वर्ल्ड क्रिकेट। यस उससे बढ़िया कोई फील्डर इवन। नहीं है। ये तो पक्की बात है। तो किसी भी पोजीशन में तो वो है ही। या मेरे को ऐसा या लगता है कि बेन बेन स्टोक्स इज अनदर प्लेयर हु इज अ गुड फील्डर, और वो भी सेम लीग में ही है जडेजा के, ट्रू। बाकी सेम इंडिया में दोनों। बॉलर्स थोड़ा कभी कभी कैच ड्रॉप कर देते हैं यार, वो एक कंसर्न है। शमी बुमराह का हाँ फील्डिंग यार। थोड़ा सा। तो भाई और दूसरे एंड जडेजा में इज ये अ है कि ऑस्ट्रेलिया में कमिंस कभी कैच नहीं छोड़ता साला, भले ही वो बॉलर है और डाइव भी मारता है। तो वो एक हल्का सा एडवांटेज है कि हमारे 2-3 प्लेयर शायद अच्छे फील्डर नहीं है। या बट जडेजा इज अ एंड बिग मैच प्लेयर यार। दिस इज तो द रीजन अश्विन विल नॉट प्ले। हाँ एक्चुअली, या क्वाइट अगर पॉसिबल। एक बार को किसी बैट्समैन को ड्रॉप करके ये भी ले लें कि, तो प्रॉब्लम ये है कि अश्विन कैन बैट, नॉट एन इशू। मेरे को लगता है कर सकता है कोई प्रॉब्लम, बट फील्डिंग फील्डिंग भाई इज कुछ द भी मेन वार्नर का कंसर्न। कैच नहीं छोड़ना है भाई। वी डोंट वांट टू बी नोन एज पाकिस्तानी फील्डर्स। भाई नहीं नहीं। अरे किसी का भी नहीं, और स्पेशली एज यू सेड वार्नर। अरे वो बहुत पागल आदमी है यार, भाई वार्नर वार्नर सबसे एंड ज्यादा, आई थिंक अगर कोई ऐसा स्टैट है कि सबसे ज्यादा कौन कैपिटलाइज करता है आफ्टर ड्रॉप कैच, दैट मस्ट बी वार्नर। वरना। ओडीआई, इन ओडीआई हम्म। क्रिकेट। यस। या और टेस्ट मैच में लबुशेन। नहीं, टेस्ट में भी मुझे याद है एक बार उसने, इंडिया ने कैच ड्रॉप किया था तो उसने विनय कुमार को इतना 10 या 12 रन से ओवर मारा था और 100 मार दी थी शायद 70-80 बॉल्स पे। पर्थ में फास्टेस्ट सेंचुरी। पर्थ यस यस, वही वाला भाई इनिंग्स में पर्थ कैच में मार ड्रॉप दी हुआ थी था, फास्टेस्ट सेंचुरी। या उसमें कैच कल ड्रॉप हुआ यस था। यस यस भाई रोहित का कैप्टनसी हैज यस टू यस बी ऑन यस। टॉप यार कल। he has to get that combinations right in the middle overs यार, सच